Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine and enjoying the distant learning. Well, here we are with probably the last lecture of CNS, which is drugs of abuse. This lecture has always been delivered by our respectable Professor Maqsood Ahmad, and this time I'll be delivering the content of his lecture in this presentation. Sir has always started his lecture or class with a recitation of Holy Quran. So I would like to carry on the same tradition, and we will begin the presentation with a recitation of Surah Ikhlas. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say, He is Allah, who is one. اللَّهُ الصَّمَدُ. Allah, the eternal refuge. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. He neither begets nor is born. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nor is there to him any equivalent. So what is basically drug abuse? Drug abuse ये है कि या तो आप इन illicit drug का use करो. What is illicit? Illicit is which is not allowed. It's an illegal drug. ठीक है, या आप licit drug जो कि allowed है, एक normal drug है जिसका therapeutic use है, उसका आप excessive use करो या उसका non medicinal use करो. So this is the definition of drug abuse. ठीक है. ओके, अब बिफोर ड्रग एब्यूज़ आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है. ठीक है, कि फ़िज़िकल डिपेंडेंस को हम फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी कहते हैं. ठीक है, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को हम सिर्फ एडिक्शन कह देते हैं. सो फिज़िकल डिपेंडेंस या फिजियोलॉजिकल होती क्या है? ठीक है, इट्स अ प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द ड्रग abusers to be the anticipated feeling of pleasure derived from CNS effect of the drug. ठीक है, उसे क्रेविंग होती है, उसे मोटिवेशन होती है ड्रग यूज़ करने की. क्यों? क्योंकि उसको CNS इफेक्ट्स आते हैं. क्या CNS इफेक्ट्स आएंगे? प्लेजर, यूफोरिया. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिपेंडेंस. वेयर साइकोलॉजिकल क्या है? उसको हम सिंपली कहते हैं एडिक्शन. ठीक है. नाउ एब्सिडेंस सिंड्रोम. एब्सिडेंस सिंड्रोम क्या है? कि जब एक ड्रग को जिसकी एडिक्टिंग पोटेंशियल है उसको हम एकदम से छोड़ दें. ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स जो आएंगे, जो साइन सिम्टम्स आएंगे, जो पेशेंट की बुरी हालत होगी ड्रग को एट वंस एब्रप्टली छोड़ने पे, उसे कहते हैं हम एब्सिडेंस सिंड्रोम. एडिक्शन. व्हाट इज एडिक्शन? बेसिकली इट्स अ कंपल्सिव ड्रग यूजिंग बिहेवियर. ठीक है, person uses the drug for personal satisfaction. ठीक है, he faces the risk of his health. ठीक है, और इसको previously हम कहते थे psychological dependence. So what is dependence? Dependence is basically a state characterized by signs and symptoms. वो state जिसके अंदर patient को वो सारे sign symptoms आते हैं जो कि उसके बगैर रह नहीं सकता. जब आप ड्रग छोड़ते हो एब्रप्टली, ठीक है, या डोज को कम करते हो एट वंस, ठीक है, या उसको विदड्रॉ करते हो उसके क्रॉनिक यूज़ के बाद, तो उसके सारे साइन सिम्टम्स ऑपोजिट होंगे टू दैट ऑफ द डिपेंडेंस. दिस इज प्रीवियसली कॉल्ड एज फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. ठीक. So we move on to tolerance. How do we define tolerance? I hope this seems a familiar word to you as we have already done tolerance and tachyphylaxis in general pharmacology. ठीक है, मेन डिफरेंस ही दोनों के बीच में ये था कि टॉलरेंस का रिस्पॉन्स डिक्रीज होता है ड्रग का when given over prolonged period of time when the initial response was there. ठीक है, और टॉलरेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं by increasing the dose of the drug. Whereas tachyphylaxis क्या होता है? डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग व्हेन गिवन ओवर शॉर्ट इंटरवल. ठीक है, और उसको आप ड्रग की डोज ज़्यादा भी करोगे तो रिस्पॉन्स सेम अचीव नहीं होता क्योंकि उसमें डिप्लीशन ऑफ स्टोर्स हो जाता है. ठीक है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसकी वजह से ड्रग ने इफेक्ट शो करना है वो ही स्टोर्स ही डिप्लीट हो जाएंगे, तो हम जितनी मर्जी ड्रग देते रहें उसका कोई इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सकता. लेकिन टॉलरेंस में द सेम इफेक्ट कैन बी अचीव्ड when the drug dose is increased.
So it can be metabolic tolerance, it can be behavioral tolerance, it can be functional tolerance. So we have already done the detail of tolerance in general pharmacology. So drug of abuse may basically we'll be studying about the different groups of drugs. It may be CNS depressants, it may be CNS stimulants, hallucinogenic drugs, and the club drugs. We'll be discussing them one by one, but आपको ये बताना है कि ये सारी की सारी drugs, 99% of the drugs, we have already covered them in various previous chapters. So we'll be just discussing the key points. ठीक है? So our first group is CNS depressants. Can you think about any CNS depressants we have covered so far? Yes, CNS depressants are those drugs which depress the overall functioning of CNS. ठीक है? ब्रेन फंक्शंस को स्लो डाउन करते हैं. क्या करते हैं? सिडेशन करते हैं, मसल रिलैक्सेशन करते हैं, ड्राउजीनेस करते हैं. कैन यू थिंक अबाउट एनी ड्रग ग्रुप्स नाउ? ओके, और क्या इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स सीएनएस डिप्रेशन के? दे स्लो द रिफ्लेक्सेस, they impair the judgment and concentration, they cause slurred or incoherent speech, impaired vision, loss of coordination, and creating feelings of euphoria and or depression. So these are the main groups of CNS depressants, like alcohol, it's the most common CNS depressant, then barbiturates, benzodiazepines, and quaaludes, which are also called udes, and they're extremely popular in 70s. We'll be discussing about them as well. Now CNS stimulants. I hope you can find out any drug which you can think about in your mind that which elevates the mood, or they can cause the stimulation of CNS. They can improve the thinking capabilities, they increase the muscle tone and things like that, which are opposite to that of CNS depressants. तो इसमें आपको कौन सी आती है जहन में ड्रग? पहले होते क्या स्टिमुलेंट्स? These are drugs that speed up the functioning of CNS, produce feelings of energy, times of euphoria, self-assertion and enhanced motivation. ठीक है? They're often used during dieting, ठीक है, to help curb one's appetite. So like बहुत ही simple CNS stimulant, one of them is caffeine, ठीक है? Then there is Ritalin, which is used specifically in children in ADHD, and amphetamines. ये भी हमने पहले पढ़ा ENS में. एम्फेटामीन्स जो हैं वो नार्कोलेप्सी और severe obesity के patients में देते हैं for treatment. Then another congener of amphetamine is methamphetamine, cocaine, crack cocaine. These are all CNS stimulants, and these drugs have potential for addiction, potential for dependence, potential for withdrawal effects, जिसे हम कहते हैं abstinence syndrome. So these are all drugs of abuse. So far we have covered two groups, which are CNS depressants and CNS stimulants.